Hey guys, my name is Arijit and welcome back to my channel Arijit the Explorer. I hope you guys are doing well. Today is a new day and it's a very refreshing day. So आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इट्स अ वॉकिंग टूर स्टार्टिंग पॉइंट इन फ्रंट ऑफ जंक्सिलोन मॉल टू पेटोंग बीच वाया बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट। जी हाँ दोस्तों, एक वॉकिंग टूर देने वाला हूँ स्टार्टिंग जंक्सिलोन मॉल से बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट होके पैटोंग बीच तक। Just standing in front, some little bit away from Jungcylon Mall, and that is Phuket Dental Clinic. This is the landmark. This is another landmark. Sleep With Me Hotel. Sleep With Me Hotel is another landmark. So I'm going to start my walking from here, and behind there is Hip Hostel where I am staying right now. So let's start walking. So first, this is the Family Mart. Family Mart, same as 7-Eleven. This is the exchange where you can exchange your currency. These are shops, and that's the Jungcylon Mall. And sadly, Jungcylon Mall is still closed, and it will remain closed till October, which local people told me. Why I don't know. Don't ask me please. ये सब shops हैं, तो आप देख ही रहे हैं. This is the Central Mall, which is also closed. रीज़न आई डोंट नो. इसका इन फ्रंट ऑफ दिस सेंट्रल मॉल यहाँ पे एक मार्केट लगता है, छोटा सा बट बहुत प्यारा सा एंड वेरी ब्यूटीफुल मार्केट वेयर यू कैन गेट फूड, cheap clothes and many things. Very beautiful market, very decorated market. I like it. Let's take a walk in the market. This is the food cart. बहुत सारे फूड स्टॉल मिलेगा आपको. क्लोथ स्टॉल भी मिलेगा जहाँ पे आप क्लोथ्स खरीद सकते हैं. Then many other things are here available. You can spend a good quality time in here. बढ़िया जगह है. And the positive news is Thailand is opening very fast. इसका मतलब सब कुछ बहुत जल्दी सब कुछ ओपन हो रहा है, सेम एज बिफोर द पेंडेमिक सिचुएशन. और ये सब टुक I am very close to Bangla Street, Bangla Walking Street. This is a tour shop where you can take tours for Phang Bay, Phi Island, James Bond Island. Just Bangla Road के काफ़ी सामने आ चुका हूँ. You can hear the noise. The Red Hot Club. And this is the Type and Disco, very popular place for tourists.
And this is the starting point of Bangla walking street. Every shops, every agogos, every nightclubs are opening. People are playing soccer क्योंकि ज़्यादातर जगह बंद है तो आपस में एंजॉय कर रहे हैं. Most of the discos, nightclubs are closed this time. This is the Tiger Night Club. टाइगर नाइट क्लब का नीचे जो बार है वो खुला हुआ है. पता नहीं ऊपर का नाइट क्लब जो है वो खुला है कि नहीं. I don't think so. ये खुला हुआ होगा. This is the Roy Illusion. But I can see अभी तक खुले हैं नहीं. देख सकते हैं आप. You can see very few people because it's dead end. जब शाम होगा लोग भी आ जाएंगे और ये जगह will get busier. रैली तो खुल चुका है. I can see rally is open. There's another alley here we open. So you can see lots of tourists are also coming slowly, but they are coming back. So that's a good news. One thing I can tell you, which is most of the 7-Eleven on Bangla Road is closed. मुझे ज़्यादातर 7-Eleven Bangla Road पे बंद दिखा है. The reason I can tell. My suggestion is if you can wait. अगर आपको लगभग 1 महीना वेट करके आ सकते हैं तो it's better that you wait and come after 1 month because तब तक सब खुल जाएगा. हाँ, एक दिक्कत है कि रेन सीजन ऑलरेडी घुस गया है तो अगले महीने से रेन ज़्यादा हो जाएगा तो ये एक दिक्कत रहने वाला है. लगभग मैं पैटोंग बीच के सामने आ चुका हूँ. तो मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को कि क्या क्या खुला है, क्या क्या अभी तक बंद है. चलिए शाम के वक्त थोड़ा पैटोंग बीच और समुद्र का नज़ारा देख लेता है. दिस इज द एंड पैटोंग बीच थाईलैंड. And that's the end of Bangla Road, and this is the Patong Beach, and I can see there are zumba class going on. और पैटोंग बीच का जुम्बा क्लास बहुत ही फेमस है. दिस इज वेरी फेमस जुम्बा क्लासेस.
lots of people are practicing Zumba, and this Zumba is very good for health, very good for fitness. So if you want, you can come here and learn some Zumba classes from here. और मुझे बहुत सारे लोग तो पैराग्लाइडिंग करते हुए भी दिख रहा है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ पटोंग बीच, ऑलवेज बिजी रहता है. तो ये है पैटोंग बीच का नज़ारा शाम के वक्त. बेहद खूबसूरत ये बीच है और बेहद खूबसूरत ये नज़ारे. आई लाइक इट हियर, इट्स ब्यूटीफुल. So this is the end of this video. If you like my work, please subscribe my channel and don't forget to hit the like button. And if you like my work, then please share my work as much as possible. And wait for my next video. Till then, good day and goodbye.